हमारी वियतनाम ट्रिप में अभी हम लोग टाम कॉक में बोट राइड कर रहे हैं एंड इतना मज़ा आ रहा है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे काफ़ी शांति है। दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय लशियस greenery, lotus and rice fields are there on the both side of this river. काफ़ी अच्छी बोट राइड है ये, बहुत शांति है यहाँ पे। इफ़ यू आर एवर विजिटिंग टू वियतनाम, Ninh Binh ज़रूर आना। Welcome back to episode 2 of my Vietnam travel series. After an exciting first day in Hanoi, exploring the famous train street and trying out local food, today's adventure takes me out of the city and onto a train journey to Ninh Binh, often called the Halong Bay on land. Surrounded by limestone cliffs, rice fields and rivers, this place feels straight out of a postcard. And the highlight, the iconic Tam Kok boat ride, where locals row with their feet while you float through stunning caves and valleys. Stay tuned because this episode is going to be pure magic. Right now I'm at the central Hanoi station and I'm off to Ninh Binh. So this is my day 2 and I'm so excited for this journey. So let's go. This is my train to Ninh Binh and I think it's going to be a great 2 hours journey. अभी मैं जा रही हूँ đồng thời thảo luận I'm at trên đại hội đảng cấp Central trên, Station. đại hội đã यहाँ bầu पे 3 ban chấp hành đảng bộ khóa 11 nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Thành được đại hội bầu giữ chức bí thư đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tháng 3 năm 2017. Đồng chí Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty được chỉ định giữ chức bí thư đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 thay đồng chí Trần Ngọc Thành nghỉ chế độ. Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ 12 được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội với sự tham gia của 242 đại biểu với phương châm hành động đoàn kết, kỷ cương, an toàn, hiệu quả. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng. After a 2-hour-long journey from Hanoi, we finally reached Ninh Binh. Now we are heading to our first stay here in Wan Chiang Hotel, and the best part, I booked a grab car to get there for just 200 rupees. Super convenient and budget friendly. At 11:30 AM हम पहुंच गए हैं Ninh Binh। अभी यहाँ पे 12 बज रहा है। जस्ट होटल में चेक इन किया है। Ninh Binh रेलवे स्टेशन से जो होटल मैंने किया था, इट्स barely 6 किलोमीटर। 10 से 15 मिनट लगे हमें आने में, इंक्लूडिंग जो ग्रैब का हम वेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग दैट टाइम। Then check in किया and honestly in Ninh Binh, although people they don't know English, they do not understand it, but they are so good, so helpful. There is this lady downstairs at the reception. She doesn't even understand a single word in English. He told her through Google Translator that our train has reached early. So ideally our train was supposed to reach around 11:45 or something, but it reached 15 minutes prior. So she was kind enough to let us check in early. तो प्लान है हम थोड़ा 10-15 मिनट आराम करेंगे and post that we'll go for the Tam Kok boat ride. So there are basically 2 boat rides over here in Ninh Binh. One is Trang Nguyen and the second one is Tam Kok. आप दोनों कर सकते हो, दोनों का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। Trang Nguyen basically UNESCO World Heritage Site है। It's the same place where the movie King Kong versus Godzilla, I think, हाँ ये मूवी का नेम है। This movie was shot at Trang Nguyen. Then Tam Kok is again limestone mountain surrounded by paddy fields.
उसका अपना एक अलग सीरीन व्यू है. बट माई सजेशन टू यू ऑल, इफ यू आर कमिंग टू निनबिन, दोनों बोट राइड्स करना है, दैट वुड बी अमेजिंग. अदरवाइज आप दोनों में से एक कर सकते हो. त्रांगेन यूजुअली ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, ज़्यादा क्राउडेड होता है, बिकॉज अगेन इट्स अ फेमस स्पॉट. एंड तामकॉक इज लेस क्राउडेड. तो आप इनमें से एक चूज कर सकते हो. इफ यू वांट less crowd, good pictures, go to Tamkok. If you want to experience nature, go to Tamkok. Then Trangen में if you want to see again the limestone mountains and everything, आप Trangen भी जा सकते हो. So now I'll get ready for our day 1 in Ninh Binh. And trust me, if you are coming to Vietnam, Ninh Binh is must. It's a very ऑफ बीट प्लेस एंड अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों में, बिकॉज दे आर ऑल इनटू द टूरिस्टी स्टफ, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है. जस्ट सम आर्किटेक्चर, दैट्स इट. हनोई से दे विल गो टू आइदर हलोंग बे एंड देन दे विल गो डायरेक्टली टू सम अदर crowded spot. But if you want a serene atmosphere, if you want lush greenery, if you want good spots, good views, some amazing moments, you want to enjoy everything at ease and at peace, then in that case just come to Ninh Binh and definitely you will love it. So let's go to Tamkok and let's explore Ninh Binh. See you. We rented a scooter directly from our hotel for just 500 rupees a day and headed straight to Tamkok. The best part, petrol here is super cheap, around 66 rupees a litre, which makes exploring on a scooter way more affordable than hiring a cab. Total budget win. हम जा रहे हैं अभी तामकॉक बोट राइड बुक करने के लिए. हमें यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी बोट राइड के लिए एंड देन वी विल गो फॉर द बोट राइड विच इज़ ऑफ ऑलमोस्ट an hour and a half. एंड इसके साथ ही अभी मैंने खाया इंडियन खाना वियतनाम में होते हुए भी. बट वॉट आई हैव डिसाइडेड कि मैं लंच में अब इंडियन खाऊंगी और डिनर में आई ईट वियतनामीज फूड. उसके साथ ही हमने खाया खाना सैफ्रॉन में. सैफ्रॉन यहाँ का बहुत फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है. सो या दैट्स इट. हम कर रहे हैं तामकॉक में बोट राइड एंड मज़ा आ रहा है. इन्होंने हमें बोट में बिठा दिया है, लाइफ जैकेट भी दे दी है. यहाँ आने से पहले अम्ब्रेला या फिर एक हैट कुछ भी लेकर आना, बिकॉज ये 1.5-2 घंटे की राइड होती है. एंड यहाँ पे भी ऑप्शंस है, लाइक इफ़ यू वांट टू सी 6 spots then it will take you somewhere around 1.5 hour. Or if you want to see 10 spots then it will take you close to 2.5 or 3 hours. So this place, if you want to do 10 spots then you have to visit early in the morning. Otherwise मंदिर जो पैगोडा होता है वो बंद हो जाता है. यहाँ पे शाम हो रही है. It's like 4 PM. So we are only doing 6 spots as of now. बाकी मज़ा तो आ रहा है. बाकी वेदर बहुत ह्यूमिड है यहाँ पे, but yeah, it's good.
बैंकॉक की बोट राइड कर लो, सबसे बेस्ट है। मेरे सर के ऊपर ना लाइमस्टोन का पहाड़ है, सो दिस इज़ अ केव, गुफा है ये, और इस पर हम बोटिंग कर रहे हैं। सामने से पत्थर आके ना लग जाएगी मेरे सर पे, सर फट जाएगा मेरा। सामने का व्यू देखना है, सामने का व्यू दिखाती हूँ। ये हम निकल रहे हैं छोटी सी केव से बाहर। दिस वुमन इज सो स्वीट। इसने मुझे इतने अच्छे अच्छे पोजेस बताए, ऐसे फ़ोटो खींचो, ऐसे फ़ोटो खींचो, ऐसे वीडियो बनाओ। शी इज़ रियली नाइस। Though she can't speak English, it's hard for us to communicate, but still, she is very sweet. Through our Tamcock boat ride, we explored several limestone caves and witnessed some of the most mesmerizing views of nature. The 2-hour ride cost us just 1200 rupees for 2 people, and it was absolutely worth it. We clicked tons of pictures, soaked in the sunset, and then headed back to our hotel. But wait, day 2 isn't over yet. The night gem of Ninh Binh is still waiting, and I'll be showing you that in the next episode of my Vietnam series. If you are loving these travel stories, make sure to hit that subscribe button and comment your favorite part from today's vlog. I've got so many more amazing adventures coming up in Vietnam, and you'll get to see every bit right here. So stay tuned, and I'll catch you in my next vlog where Ninh Binh's night secrets come alive. So bye bye.